In the increasing and decreasing function, because of time factor, I'm straight away going into the concept which we normally use in the examination of CBSE, that how we understand a function f of x y is equal to, for every x belongs. There is a concept in trigonometry called tan theta. What is tan theta? In class 11, we have studied tan theta as slope of a line. Slope of a line. This is the concept based on which increasing and decreasing is identified in calculus topic of class 12th. Very interesting phenomena. What is the relation between calculus and trigonometry? And how the increasing behavior and decreasing behavior of a function is identified in this using the slope. Before I teach how it is related, I'll just show you a small graphical unit to understand the behavior of a function. In real life also, we have functions very easy to understand. Every human being will have ups and downs in their life. Ask your parents, they will tell you, because your parents must have surely experienced the up and the down in the life. That is exactly mathematically what we call the up is known as increasing, the down is known as decreasing. Now the question is how to go about understanding this concept of increasing and decreasing using the concept of trigonometry. I'll show you a simple fact. मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया. Look at my hand, how it moves. Just watch. It is on increasing order. I'm decreasing down, going down, and again I'm increasing. Now, what is the relation between the tan theta, what we call slope of a straight line, which is called n. Here, for a particular curve which is going on an increasing note, if I divide this into quadrants of trigonometry, supposing that this is a curve I have taken. Now, it is y is equal to f of x. I draw a tangent at any point, say this is the point P1. When I draw this makes some angle called theta 1. When I measure this angle, if this angle is less than 90 degrees, then function is definitely increasing in behavior. How? Tan theta within 90 degrees range, it is always positive. Please remember, tan is positive in the first quadrant. Here sine is positive, cos is positive, tan is positive. Therefore, whenever you draw a line at a particular point of the curve, that is called a tangent. If the angle made by the line
with respect to x-axis is less than 90 degrees, then such a slope is called positive slope. Suppose I select a point called P2, to which I draw a line. Now, if the measurement is taken of the angle, angle is always measured in the anti-clockwise direction. If it is theta 2, this is more than 90 degrees but less than 180 degrees. More than 180, more than 90 and less than 180 is always in the second quadrant of the trigonometry. In trigonometry, second quadrant, sine is positive, cos is negative. Therefore, tan is negative. If tan is negative, tan is actually called slope. The slope is negative. If the slope is negative, then it is called decreasing function. I will try to give this a mathematical shape in a different way. Before that, I would request you to take a few points. Please write down. Point number one. Point number one. M is equal to tan theta is called slope of a straight line. Slope of a straight line. Point number two. Point number two. If theta is an acute angle, if theta is an acute angle, then tan theta is positive. Then tan theta is positive. Then tan theta is positive. If theta is greater than 90, if the theta is greater than 90 and less than 180, then tan theta is negative. Tan theta is negative, which means slope of a straight line is negative. 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 I have drawn a small diagram which you can take so that you will have this in the visualization. Please draw the diagram on the blackboard, whatever I have drawn, please write it down. I'm coming to your topic. You may get a doubt as to why and how tan theta, which is a trigonometric function, although it is defined as a slope of the straight line, how is it related to the calculus part, and that too increasing and decreasing function? My simplest answer to you is that you have your PGT mathematics in your school. They must have surely taught, I assume, I don't know whether they have taught or not. I assume that they must have surely told you in class 11, tan theta is equal to, m is equal to tan theta as a slope of the straight line. Next thing is tan theta is equal to sin theta by cos theta. They must have taught in class 9th. They must have surely taught, and you must have learnt it, that tan theta is equal to sin theta by cos theta. And the slope of a straight line is defined as, these are all the rules which I am trying to recapitulate for you. This is, what is the slope is defined as?
What is the slope defined as? Slope is defined as in calculus of class 11 dy by dx. Dy by dx. That is derivative of a function. Your teacher must have surely told you that derivative of a function is nothing but slope of a tangent. Now I bring the correlation, not going into much depth because it will take at least 2 hours class for me this to teach. But I will be completing it in another 10 minutes this. Now the slope of the tangent. What is the meaning of tangent? Tangent, this is a tangent. Why it is called tangent? A straight line which touches a curve at a point is called tangent. That's what this you have to fill here. Tangent is actually a straight line which touches a curve at a point. That means if I draw a curve and I take a point, say P, if I draw this is called tangent. Why? Because it is touching at one point. If it moves through, then this is called secant. I do not want now to discuss about secant. A secant is not required at this point of time to discuss with. To understand the concept of limits, the concept of increasing and decreasing function. You must know what is a tangent. Tangent is a straight line which touches a curve at a point called P. This is the diagram I have shown you. Now, in what way the slope of a tangent is defined as dy by dx? Your teachers must have taught you rate of change of quantities. They must have taught you. Now, if I draw x-axis here and y-axis, this to this tangent cutting at that particular point, if I take this angle, this whatever the angle I get, for which if I calculate theta, tan theta is actually called m. M is also called dy by dx. Please remember, this is the basic relation between trigonometry and calculus. If you do not understand the relation between trigonometry, geometry and then calculus, you will not understand what is increasing and decreasing function. I have cleared myself in a very crisp and small, short manner. This is what the explanation I will give you. You have to note and remember this part. What is that? When you call tan theta as a slope, we call tan theta as slope of a straight line. Slope of a straight line. Please remember. When I call m is also slope of a straight line. But when you attach a point, when you attach derivative dy by dx, then the definition changes, that it becomes the straight line is actually gets connected to tangent. That means a slope of the tangent is same as the slope of a straight line drawn to a particular curve at a particular point called P. Please remember, this is the definition I take forward. Why and how I take forward? Please take this diagram and this part. Then again I will teach you little more. Please continue this.
Yes. Now I will be explaining you what is increasing and decreasing using the slope of a tangent. That is, slope of a tangent is nothing but we are talking about dy by dx, derivative of the function y at x. So now I'll show you picturization of increasing and decreasing. Now I'm rubbing it off to explain you the concept of increasing. Listen carefully. एग्जामिनेशन में आपको कैसे करना है इसको दिखा रहा हूं. It is x-axis and y-axis. Assume that this is a curve. This is a curve. Y is equal to f of x. This curve has points P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6, P7, P8. Now I draw at P1 my first tangent. This is my first tangent. Please remember, this as I go upward direction, this is next. This is next. This P5 becomes absolutely straight. I think I'll draw a little bigger so that you understand it, because this bigger figure has become a little small to understand. P1, P2, P3, I take it is P4, P5, P6, P7, 0.1 to 0.7 I've taken. Now, I draw this. This is one tangent called T1, tangent 1. This is my tangent 2. This is my tangent 3. Watch carefully. What is that I am trying to take? This angle is, say, theta 1. This angle is theta 2. This angle is theta 3. Theta 1 value is greater than theta 2 is greater than theta 3. Please remember, ये 60 डिग्रीज होने से थीटा 2 45 डिग्रीज हो जाती है, और मैं दूर जाऊंगा, दिस बिकम्स 30 डिग्रीज, और दूर जाऊंगा, the theta value gradually becomes 0 when the tangent is drawn absolutely parallel. Please remember to the tangent. When the tangent T4 becomes parallel to the x-axis, T4 is parallel to the x-axis, that time the theta value is 0 degrees. Please remember. I'll explain that later. Now I draw another side, the tangents. Please remember, if I draw a tangent here, then this is the angle called theta 5. When I take this angle, this tangent, this is the theta 6. Now, as I move towards the x0, that is origin of the x-axis, origin of the coordinate axis, the value of theta starts increasing in such a way it gradually becomes to the 90 degrees where tan is not defined. That means theta 5 is less than theta 6, is less than theta 7, so on and so forth. Now, please remember the
order. Please listen, don't write anything. Listen to me first, listen to me. That's very important for you to understand. Mathematics में कभी लिखा नहीं जाता, पहले listen that carefully. As I draw the tangent for P1, P2, P3, the tangents are going further, quite away from zero से, मतलब origin से दूर भाग रही है थीटा. जब मैं दाहिने तरफ डालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, एक्यूज एंगल का जो टेंजेंट्स है वो जीरो के तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं. इसका अर्थ ये है जब आपका टेंजेंट ऑरिजिन से दूर जाती रहती है, उसका वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाती है और जीरो हो जाती है. जब आप राइट हैंड साइड पे when theta 5, theta 6 लेंगे, you will come towards theta, towards zero, then the value of theta gradually moves towards 90 degrees. Please remember, this concept is very important for you to understand the concept of trigonometry into calculus. Listen, what is tan 60? What is tan 60? What is tan 45 degrees? What is tan 30 degrees? Can anyone tell me what is tan 60? Tan 60 is root 3. Am I right? It's very simple. Sin 60 by cos 60. Sin 60 by cos 60. Sin 60 is root 3 by 2 upon 1 upon 2. 2 cancel. You get root 3. Tan 45 is 1. Tan 30 is 1 upon root 3. 1 upon root 3. Now I go tan 15 degrees. It further reduces. Why? Because root 3 is 1.7832 dot. 1.782 has become 1 with a 15 degrees gap. Now the 1 has become 1 upon root 3. That is something like 0.86 dot. Now as I move towards this, another 15 degrees I go down, another tan 0 is 0, therefore what happens, trigonometric value tan theta becomes 0. Tan theta becoming 0 means slope is 0. Slope is 0 what? You go back to straight line topic where you learned from your teachers. Any straight line whose slope is 0 is always is parallel to x-axis. That means a line which is parallel to the x-axis will always have slope as 0. A line which is parallel to y-axis or the slope of y-axis is always not defined. Why? Because it is infinity. Tan 90 is infinity. Please remember this fact. So now what I am trying to explain. Now when I move towards the angle, the tangents, what is happening is the value of tan theta is decreasing, but at the same, that means I'm moving in the direction. If I move in this direction, in the hand, the direction of the hand which I'm going now, if I go in this direction, what happens? First I'll get T3. First I will get T3. This T3 I'll get. Then I come to T2. Then I come to T1. That means as I move towards the value, the theta value is gradually increasing here. The value of theta 3 is 30 degrees. This is 45, this is 60. As I move towards, automatically what happens? The value of trigonometry, the theta value is increasing. As and when theta value is positive, tan theta is always positive because it is held within the range of 0 and 90. That means if the tan theta is positive means slope is positive. Slope is positive means dy by dx is also positive. So that's the reason why when you move towards this direction, your direction is always of the curve is like this. Please look at my hand. I'm moving in this direction. That means my hand is going in the increasing direction. That's why your teacher must have told you in your classroom while teaching increasing and decreasing that whenever dy by dx is greater than 0, then we call that function as increasing function.
Whenever dy by dx starts decreasing, then the value that the dy by dx is less than 0, then the functions in nature is known as decreasing. So let me take the definition now. Write down in your definition in your notebook. Point number 1. Let y is equal to f of x. Let y is equal to f of x be a real function. Be a real function where x belongs to capital R. Where x belongs to capital R. Where x belongs to capital R. And the function f of x is defined. F of x is defined in a closed interval a comma b. In a closed interval a comma b. In a closed interval a comma b, such that f dash x or dy by dx is greater than 0 for every x belongs to a comma b within parenthesis, open brackets, within brackets, open parenthesis. I give you the same definition in a different way. Before I give this definition, you please first take this diagram so that when you revise at home, you will understand exactly what is an increasing function as such. First you take this. Yes, I am now rubbing this diagram and to define increasing and decreasing functions in a very crisp manner which you have to use in the examination. आप एग्जामिनेशन में जो फार्मूला को यूज करना है उसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, तो ध्यान दीजिएगा. ये आपके टेक्स्ट बुक के भी डेफिनेशन यही ऐसे ही होगा. लेट y is equal to f of x be a differentiable function. डिफरेंशिएबल मतलब जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो in a comma b, an interval called a comma b, if f dash x, that is dy by dx at x belongs to a comma b, small a small b, within brackets, within small brackets, is greater than 0 for every x belongs to a comma b, then f of x is called
increasing function. If I just draw a small patch of diagram, this is the point, critical point, C called critical point, where the tangent becomes parallel to x-axis. Now, all this portion, it is f dash x greater than 0. That is, you have drawn the graph between A and B, and this is the point C where tangent is parallel to x-axis. Left of the critical point, it is greater than 0. I am writing f dash x is equal to dy by dx is less than 0 for every x belongs to A comma B. Then f of x is called decreasing function. Decreasing function. This is the portion of decreasing behavior. F dash x less than 0. Write down. यस सो अभी तक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट के डेटा दिया है. डेटा के जरिए मैं एक दो प्रॉब्लम आज आपको करके सिखाऊंगा. आप इसको रिवाइज करके आइए. कल मैं आपको इसके डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, वो आपको सिखाऊंगा. मेरे ख्याल से आपने लिख लिए होंगे, इसको याद रख लीजिएगा. ये याद रहना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. अब मैं आपको प्रॉब्लम लेकर के पढ़ा रहा हूं. फॉर्मूला याद रख लीजिएगा. डायग्राम को मैं साफ नहीं कर रहा हूं, यहां पर ब्लैक बोर्ड पे वैसे की वैसे ही रहेगी. और मैं चाहता हूं आप लोग इस डायग्राम को हमेशा याद रख लीजिएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हम मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं. जैसे मैंने यहां लिखा है, इसका dy बाई dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इस तरफ ये dy बाई dx लेस देन 0 होना चाहिए. ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो इसके जरिए मैं आपको एक प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा. आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x
where x belongs to capital R is an increasing function. An increasing function. Now, आपके अपने पेन्स को ड्रॉप करिए बेटे. सभी लोग ब्लैक बोर्ड के तरफ ध्यान दीजिएगा. मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में कैसे निकालता हूं. ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रख लीजिएगा. याद रखिए, मैंने पिछले जो पढ़ाया 4 मार्क के लिए, और ये 4 जोड़ करके आपको 8 मार्क होंगे. आप सुन लीजिए, केयरफुली सुनिएगा. इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है. एफ ऑफ एक्स लिया मैंने. एफ ऑफ एक्स में ये दिया हुआ है, वो x बिलोंग्स टू r है या क्या है, मुझे उससे कोई अभी जरूरत नहीं है. मैं करूंगा क्या, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग. ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx फाइंड आउट कर रहे हैं आप. df dash x is equal to d by dx of x cube minus 3x square plus 4x. अब ये हो जाएगी आपको डिफरेंशिएट करने से d by dx of x cube, d by dx of 3x square. ये आपको आता है, मैं जानता हूं, फिर भी मैं आप लोगों को पहले प्रॉब्लम होने के नाते मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं. तो यहां डिफरेंशिएटिंग एक्स क्यूब, रूल क्या है, रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस 1. इस रूल के तहत ये आपको बन जाएंगे 3x स्क्वायर. एन के एन जंप हो जाएंगे यहां पर, एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 माइनस यहां पर 3 इज ए कांस्टेंट. ये रूल है, डिफरेंशिएटिंग k इंटू एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. मतलब फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होगा जब वो मल्टीप्लायर होती है. तो 3 इंटू डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर इज 2x plus differentiating 4x is 4, because d by dx of x is 1. So now what I do is 3x square minus 6x plus 4 I have got. Please note down this, I don't have space. Then I'll explain you how you have to identify it's greater than positive. Yes, I hope that you have taken this problem
मैं अभी ये प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है. आई विल बी कंक्लूडिंग इट नाउ. Whether the derivative I have got is greater than 0 or not for every value of x, I will have to verify. Look here. I am carrying the last step. F dash x is equal to 3x square minus 6x plus 4. This is the value I have got in the final stage. What I am supposed to do according to the rule? First I will write the rule. Rule is, I have to prove, I am writing what I am thinking. I have to prove f dash x is greater than 0 for every x belongs to capital R. आप प्रॉब्लम को पुनः एक बार रिविजिट करिए. प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है, if f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belongs to R, is an increasing function. You have to prove. Now, that's what I have written here. To prove f of x is an increasing function, I am supposed to prove f dash x greater than 0. Look how I do this. I take this as 3x square minus 6x plus 3 plus 1. 4 को मैंने दो भाग में बांटा क्योंकि पहला दो नंबर में 3 इज द कॉमन फैक्टर. मैं 3 को बाहर निकालने की योजना बना रहा हूं. 3 बाहर निकालने से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाता है. Now this is 3. It is a minus b whole square formula. X minus 1 whole square plus 1. Please remember, square of any number, square of a positive or a negative number is always positive. That is greater than 0, is always positive. Why? Because you take minus 2 whole square is 4, minus 3 whole square 9, minus 10 whole square 100. Square of any number is positive. That is the rule which I observe in this problem. Where is the square? Here, this is the area which I focus in the expression. X minus 1 is, if you take x minus 1 as a number square is always positive. It means 3 into a number square is always positive. So this is positive number. Plus 1 is a positive number. This is positive, this is positive. So the sum of these two positive numbers is always positive for every x belongs to capital R. आप x capital R का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जो वैल्यू लेना है आप अपने मन से ले लीजिएगा. इसमें मैं हस्तक्षेप ही नहीं करूंगा ना आपके टीचर. एक्स वैल्यू जब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जब एक्स वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर हो, उसके स्क्वायर तो रिजल्ट मिलने के बाद जो स्क्वायर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है.
So square of any number is positive is the rule. Therefore, this is positive. This is positive. Positive plus positive is positive. Therefore, you take any value, it means f dash x is greater than 0 for every x belongs to capital R. It means फंक्शन का कर्व ऐसा होता है भाई, देखो मैं यहां दिखा रहा हूं, वो एक ही जैसे जाता रहता है, ऊपर ही जाता रहता है, वो नीचे उतरता ही नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आप पहले ये ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की देखेंगे हम। I hope you have taken the problem, please. Hello. Have you taken the problem? Yes, sir. Yeah. Now I am taking one more problem to, this will be my last problem. This is slightly different. Previously we proved that it is an increasing function. Now what I am going to do is that I will be finding out the intervals in which a given function is increasing or decreasing or both. We will be identifying. So take a problem, I'll let you know. Let f of x, let f of x be a real function, defined as f of x is equal to 10 minus 6x minus 2x square, 10 minus 6x minus 2x square, full stop. Find the intervals in which f of x is continuous, f of x is increasing, f of x is increasing and decreasing.
Come on, leave your pen, watch the blackboard. What I do now here, please look the blackboard, all of you, please. Before I go into the problem, the moment I see in the examination an increasing and decreasing problem, my immediate action is, oh, this is an increasing decreasing function. It means if dash x, we have to verify greater than 0, if dash x less than 0. This is for every x belongs to R, for every x belongs to R, we have to prove it is an increasing function, it is decreasing function. Now we have rules in our front. जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं वो रूल्स में पक्का होना जरूरी है. जैसे मैंने एग्जामिनेशन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये शब्द मैंने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो मेरे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए इंक्रीजिंग का रूल क्या है, इंक्रीजिंग का रूल क्या है, डिक्रीजिंग का रूल क्या है, मुझे पता चलना चाहिए. तो मैं, आप मेरे अपने दाएं ओर मैंने लिखा है आपके लिए, आप भी लिख सकते हैं बाद में. अब मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर इज दिस. यहां एफ डैश एक्स की जरूरत है. एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 माइनस 6x 2x square. Put there, again I am showing you one by one step. मैं एग्जामिनेशन में इस प्रॉब्लम को पूर्ण तरह मार्क्स लेना चाहते हैं तो मैं हर स्टेप को पहले केयरफुली लिख लेता हूं. तो डिफरेंशिएटिंग कांस्टेंट इज 0, differentiating a constant multiplier 6, d by dx of x is 6 only because d by dx of 1 is 1, minus d by dx, the 2 comes out, d by dx of x square is 2x multiplying. So minus 6 minus 4x, this is my f dash x. This f dash x value, once I get, I must know the interval. Please do not write. One ladki is writing here. मेरे सामने बैठी हुई है, वो लिखना नहीं चाहिए बेटे. आप पहले देखिए क्या कर रहा हूं मैं. अब मैंने f dash x का वैल्यू मैंने निकाल लिया. अब f dash x वैल्यू को मैं और सिंप्लीफाई करूंगा. 6 प्लस 4x, माइनस को बाहर निकाल के रखा. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए, उसने ये कहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. इंटरवल आइडेंटिफाई करना सख्त जरूरत है हमारे लिए. इंटरवल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए कैसे. इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करूंगा. I will try. This is a very important step. To get the intervals, you have to make it 0. So what is it 0? Minus 6 plus 4x is equal to 0. Otherwise also, if you do not want to take this step, you can directly take this step. Minus 6 minus 4x is equal to 0. So minus 4x is equal to 6 because minus 6 goes to right side. X is equal to minus 6 by 4. 2 3s are, 2 2s are, minus 3 by 2. I have got a value called minus 3 by 2. After getting this, what I will do, I will draw a number line. What is it called number line? X belongs to capital R. Minus infinity to plus infinity I am going. Because if I take minus infinity to plus infinity, in between I get 0. 0 के लेफ्ट हैंड साइड में minus 3 by 2, that is 1 point minus 1.5. 1 के minus 1 के बाद minus 1.5 आता है. तो मेरे पास मेरे जो इंटरवल है x इनवर्स का, कैपिटल R का, x का, वो इंटरवल पूरा 2 टुकड़ों में बट गया.
वो कैसे बढ़ती है मैं पुनः दिखाऊंगा आपको। पहले ये आप लिख लीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा स्पेस लेकर के एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप लिख लीजिए इसको। यस, I believe you have taken the left portion, what I am rubbing it now. Assuming that you have already taken, मैं आप ध्यान से देखिएगा, मैं फंक्शन को रब नहीं कर रहा हूं और ऊपर का स्टेटमेंट को रब नहीं कर रहा हूं, केवल उतना ही पोर्शन निकाला जो मुझे जरूरत अभी नहीं है। अब आप केयरफुली वॉच करिए। इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने x का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, क्या इंटरवल होना चाहिए। इंटरवल ना देने की वजह से हमें इंटरवल क्रिएट करना पड़ता है, वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, जिसे कहते हैं हम कैपिटल आर। कैपिटल आर के ऊपर हम जानते हैं बीचों बीच 0 आ जाती है, उसके बाद पॉजिटिव स्टेप स्टार्ट आ जाती है। ठीक है, 0 जानते हैं तो हम उसको ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो पॉइंट मिला है x इज इक्वल टू -3/2, इसको तो 100% हमें ड्रॉ करना है। तो मान के चलते हैं यहां पर -3/2, जिसे -1.5 भी कह सकते हैं। जैसे मैंने उस नंबर को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, अब मेरे पास 2 अलग अलग इंटरवल्स आ चुके हैं। ये इंटरवल नंबर 1 है और ये इंटरवल नंबर 2 है। मैं अलग से लिख लेता हूं। इंटरवल 1 क्या होता है, -इंफिनिटी टू -3/2 ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लोज हो गए तो at x is equal to -3/2 the function's derivative is 0, तो क्लोज नहीं होना चाहिए। I2 क्या होता है, I2 क्या होता है, -3/2 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक जाती है। अब मेरे पास, जैसे मैंने कहा, यहां 2 अलग प्रकार के इंटरवल्स आ चुके हैं। इस इंटरवल के जरिए अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है, सॉरी फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शंस के डेरिवेटिव नेगेटिव है। क्यों? फंक्शन के डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से उसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग, फंक्शन के डेरिवेटिव नेगेटिव होने से, लेस देन 0 होने से डिक्रीजिंग कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर, आप मुझसे सवाल दाग सकते हैं कि सर -इंफिनिटी से लेकर के आप 3/2 तक बहुत बड़ा इंटरवल ले लिया और I2 के लिए -3/2 टू इंफिनिटी तक एक बहुत बड़ा इंटरवल लिया। क्योंकि बड़ा, मेरा कहने का अर्थ यह होता है, बड़ा का मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन में वो बहुत बड़ा ओशन है, इसमें कितने पॉइंट्स रहेंगे ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना आपके टीचर को पता है। उतने सारे नंबर्स होते हैं, मगर सारे नंबर्स इसके दाएं, इसके बाएं ओर सारे नंबर्स इससे कम ही होते हैं, इसके दाएं ओर इससे ज्यादा होते हैं पॉइंट नंबर्स। तो इस दृष्टिकोण से हम करते क्या है, अभी I1 से एक वैल्यू ले लेते हैं, I1 से एक वैल्यू लेते हैं, -2 बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3/2। क्यों? -2 कम्स आफ्टर -5। तो ये इस इंटरवल में से मैंने किसी एक वैल्यू को चुन लिया, किसी एक वैल्यू को चुन लिया। सो let x is equal to -2, this belongs to -infinity to -3/2। आपको डाउट आ सकता है, सर आपने केवल -2 को ही क्यों चुना? यार -3 ले लो, -4 ले लो, -2.5 ले लो, -4.5 ले लो, जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू I1 के अंतर्गत आना है। इट हैज टू कम वेल विद इन I1। तो मैंने I1 का वैल्यू लिया। अब इस वैल्यू के पास f' के वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 आइडेंटिफाई करूंगा। f' क्या है? -6x
सॉरी -6 -4x, इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 लेना है। तो सब्स्टिट्यूट करिए भाई, -6 -4 इंटू -2 इज +8, इट इज +2 greater than 0, therefore f dash x is greater than 0 at x is equal to -2, hence f dash x is greater than 0 for every x belongs to -infinity comma 3/2। अब इसका कंक्लूजन कैसे निकलता है? हेलो, लिसन टू मी केयरफुली। मैंने I1 में एक वैल्यू लिया, मैंने अभी कहा बेटा, मैंने एक वैल्यू क्यों लिया? मैं -2 को पसंद करता हूं तो -2 लिया, आप -4 को पसंद करते तो -4 लीजिए, मगर जो भी वैल्यू लेते हैं I1 से वो -3/2 के बिल्कुल नीचे तरफ होना चाहिए, उस पार नहीं होना चाहिए। आप किसी भी वैल्यू को चुन करके f dash x में डालिए, f dash x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे पता चला f dash x इज ग्रेटर देन 0। यही हालत होगी f dash x का जब यहां से लेकर के यहां तक कोई भी वैल्यू लीजिएगा वो 100% पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मेरे फंक्शन यहां पर इंक्रीजिंग होगी। तो at pi/2, at -3, what happens is that at -3, what happens is -3/2, what happens that derivative is always 0, so यहां पर जो tangent है वो पैरेलल हो जाती है, फंक्शन ऐसा जा रही है हर पॉइंट के लिए इस इंटरवल में। अब क्या होगा, अब मैं I2 का वैल्यू लेता हूं, I2 में मैं क्या लूंगा, I2 के लिए क्या लूंगा, देखिए मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं I2 से यहां -3/2 के राइट साइड में कोई वैल्यू ले लेता हूं। लेट x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू -3/2 कमा इंफिनिटी। -3/2 कमा इंफिनिटी के बीच में -3/2 के बाद -1 आती है, -1 के बाद 0 आती है, 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया है, आप जो वैल्यू लेना है आप ले लीजिएगा, मगर -3/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो f dash x को आप उस पॉइंट पर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। -6 -4x at x is equal to 1, तो सब्स्टिट्यूट करने पर -6 -4 is -10 less than 0, therefore f dash x is less than 0 for every x belongs to I2। मतलब यहां पर कर्व ऐसा होगा, मतलब यहां पर f dash x is less than 0, यहां f dash x is greater than 0। जो वैल्यू लेना है ले लो I1 में, वो पॉजिटिव होगा, जो वैल्यू लेना है I2 में लीजिए, f dash x नेगेटिव होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव दैट इज इंक्रीजिंग, इस लेवल में इस इंटरवल में वो नेगेटिव फंक्शन दैट इज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने प्रूव कर दिया यहां पर f dash x ग्रेटर देन 0 I1 में और f dash x is less than 0, so I2 में वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। This is the end of your problem. Please write down it.